Hello dear viewers, I Muhammad Arif welcome you on my YouTube channel Apex Tutorials. We will keep continue our grammar, English grammar in this video usage subject verb agreement. In the last video I discussed 3 rules in this section and today I will start with rule number 4. But before starting today's video, I want you to take a screenshot of the board and then pause the video and note down all these points in your notebooks, and after that restart the video and then it will be more beneficial for you. So let me start, dear children. Our rule number 4 is here. I have written 4 words here: each, every, everyone, many, are. When we use these words with the subject, then the verb that followed the subject that remains in singular number. Let me see sentence 1. Each of these substances is found in India. Before it, again, I would like to remind you, in the very first video, I told you that verb depends on subject. Subject-verb agreement. So first of all, we have to find out our subject. Our subject is each of these substances. Although we see that the word that is near to the verb, that is substances, and it is a plural noun, substances, but we have to see our full subject. This is a must for all of us, and in this subject, each of these substances, there is the word each, so the sense of the subject transfers into singular number. So if it transfers into singular number, then we will use only verb in a singular number. Next, our sentence is every one of the boys loves to write. Again, we see that the word boys is in plural and it is near to the verb, but we have to check out our subject, complete subject, and it starts from every one of the, then it ends on boys. So every one of the boys. So boys, no doubt, is a plural noun, but the sense of the subject transfers into singular number, everyone, and then we will use only a verb in singular number. So loves here is right. Then the next sentence is here: many a man does not know his own good deeds. Many and many are. So when we use many, only many without a, then it is considered as plural, but when we use many a, then it is considered as singular. So our subject is many a man. So that's why the subject is in singular number, so verb that follows it also will be in singular number. Does not know. So the verb is right here. Then the next sentence is there: each day and each hour brings us a fresh anxiety. Our rule 1 was there that when we join two singular nouns with the word and, it follows a plural verb. But here we see that these two singular nouns are determined with the word each. Each day and each hour. When we add each to these nouns, then the verb will be in singular number. So each day and each hour, so the verb that follows it will be in singular number. So each day and each hour brings us a fresh anxiety. Then the last sentence is there in this rule: every boy and every girl was given a packet of sweets. The same here, that boy and girl, no doubt singular nouns joined with and, but they are
determined with every boy and every girl. So that's why the verb will be in singular number and the verb is was. So हमने देखा children कि each, every, everyone, many, a ये words जब ये टर्म्स जो हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर होती हैं तो हमारा सब्जेक्ट चाहे उसके अंदर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया हो, प्लूरल नाउन मौजूद हो, इसके बावजूद जो है सेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज देयर सिंगुलर, तो वो सब्जेक्ट की सेंस सिंगुलर होती है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो ईच यानी प्रत्येक एक, इसीलिए यहां पे एक की सेंस के हिसाब से इज वर्ब सही है. देन एवरी वन ऑफ द बॉयज, बॉयज बहुत सारे हैं बट हर एक, एवरी वन प्रत्येक, सो दैट्स वाई द वर्ब इज देयर लव्स. अगेन वी सी मैनी अ मैन, मैंने आपको बताया मैनी अ, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जब हम खाली मैनी यूज करते हैं तो ये प्लूरल की सेंस रखता है, जब हम मैनी को अ के साथ यूज करते हैं तो ये सिंगुलर की सेंस रखता है, मैनी अ मैन. सो दैट्स व्हाई द वर्ब दैट वी हैव यूज्ड हियर दैट इज in singular number. Next sentence is there. Each day and each hour brings us a fresh anxiety. प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा. मैंने रूल नंबर 1 में आपको बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब उनको फॉलो करती है वो प्लूरल में होती है. दो सिंगुलर नाउन हैं लेकिन इनको ईच से डिटरमाइन कर दिया गया है, ईच डे ईच आवर. जब ईच डे और ईच आवर यानी ईच से ये सिंगुलर नाउन डिटरमाइन हो जाते हैं तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर में आती है. नाउ आवर रूल नंबर 5 इज देयर. मैनी वर्ड्स are there, those we see that they are plural in the formation but they are singular in the sense. So let me see, the words are there: news, politics, physics, or some proper names. Some names of diseases are also there, like measles, and subject names also there, mathematics. So they look in plural number but they are in the sense singular. So our first sentence is the news is true because we know that it, and these words always considered as singular. That's why we have used the verb in singular. The news is true. Again we see physics is still an unsolved riddle for me. So physics is the name of a subject. A subject. We see that S is there in the end and it looks in formation as plural, but we see that physics is singular, is considered, always considered singular. That's why the verb that we have used is here is in singular number. Next sentence is nowadays politics is also a career. So politics, again the same word that looks in formation a plural but it is considered as singular. Nowadays politics, that's why the word that has been used here that is in singular number and that is. Gulliver's Travels is an interesting book. Gulliver's Travels is the name of a book by Swift, and although we see that travels is plural, Gulliver's Travels, but actually this is the name of a book, so that's why it is considered, it is proper name, that's why it is considered as singular and we have used the verb in singular number that is. The Arabian Nights and some other names are also there. Three Men in a Boat, many of the names of the books are there, those are in plural, but actually as they are the names of the books, they are proper names, so they follow only a singular verb. Our last sentence in this rule is there. The United States has a big navy. The United States, it is the name of a country. United States, we see that S is there in the last and in the formation it is a plural word, but even then it is considered as it is a proper name and it is considered as singular. That's why it follows a singular verb that is has.
सो डियर चिल्ड्रन, ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। न्यूज है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर नेम्स भी होते हैं। तो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सारे तो कवर नहीं किए जा सकते, जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इसी तरह से मैथमेटिक्स होता है, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स वगैरह होता है, प्रॉपर नेम्स जो फॉर्मेशन में प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द न्यूज इज ट्रू। न्यूज वर्ड प्लूरल दिखाई देता है फॉर्मेशन में, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है, जिस वर्ब ने इसको फॉलो किया है, वो सिंगुलर वर्ब है इज। Then we see physics is still an unsolved riddle for me. तो physics is the name of a subject like mathematics. हम देखते हैं कि फॉर्मेशन में इसमें एस लास्ट में है, ये प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नेम की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की है इज। Then nowadays politics is also a career. हाँ, तो पॉलिटिक्स भी उसी तरह का वर्ड है जो हमें फॉर्मेशन में प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए इसको फॉलो करने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। Then we see Gulliver's Travels is an interesting book. Gulliver's Travels, जैसे इसमें सेंटेंस में भी लिखा है, वो एक बुक का नाम है। हालांकि हम देखते हैं Gulliver's Travels, ट्रैवल्स प्लूरल है, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नेम्स एंड इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर, तो इसीलिए हमने इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। अब लास्ट सेंटेंस हमारा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी। तो यूनाइटेड स्टेट्स हम सब जानते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल, दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री, ये कंट्री का नाम है। फॉर्मेशन में ये प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन प्रॉपर नेम की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसको सिंगुलर वर्ब फॉलो करती है, हैज। Well, dear children, take a screenshot and note down all these points in your notebook, and after that again you restart the video. Our rule number 6 is there, that we see dozen, score. Two words are there, some other words are also there, such kind of words are also there. They look singular in the formation, but they are considered as plural. As dozen, we see that dozen is the name of a group of 12 things. And then we see score, then it is also 20 things are called score. So we see a question, it is we will understand it with the help of a question. A question has been asked, what is the price of plain paper? The answer comes, we see 2 dozen cost 12 rupees. 2 dozen. The word dozen is here, it looks singular in the formation, but it is considered always as plural. So that's why the verb that has been used here, that is in plural verb. It is present indefinite, and in present indefinite we use V1 first form of the verb with plural subjects. Here you can see 2, but now I have used 1. 1 is score. The same verb plural will be used here. Now we come to our rule number 7, that is pains and means. 2 words I have written here. So these 2 words can be used as singular and as plural. It depends on the user that how he or she wants to use it in singular or in plural. We can use these 2 terms in both the ways, but the consistency must remain the same. Great pains have been taken. So pains word have been used here, great pains. So the verb tells us that here the word pains has been used as plural. Verb is telling us, not the subject, only verb is telling us that the word pains has been taken here, has been considered here as plural. Great pains have been taken. We see again, much pains has been taken. So the verb has here, it is telling us, it tells us that the word pains here has been used as singular. Now we see all possible means have been tried. So
means word has been used here, and the verb have tells us that the word means here has a plural sense. So we come to know from our verb that means word has been used here as a plural. All possible means have been tried. The means employed by you is sufficient. Again, the same word means is here, but the verb is tells us that here the word means is considered as singular. Now we see my means were much reduced owing to that heavy loss. When we use this word means as a source of income, so then this word is always considered as plural. My means were much reduced owing to that heavy loss. So from this heavy loss we come to know that means word has been used here as the source of income. So that's why when it is used as a source of income, so the verb that is used that follows is that is in plural form. Now our rule number 8 is there. Now we talk about collective noun like jury, committee, mob, etc. Okay. The jury were divided in their opinions. The same we see here that collective nouns are used in both the ways. Whether we can use these as a singular and as a plural. But the same thing that we discussed here, the same will remain here. The jury were divided in their opinions. So here the word jury, that is a collective noun, a group of people. So the sentence as here has been used as plural. So that's why we come to know that the members of that jury were not single-minded. They divided their opinions, means they have different opinions. That's why the verb that has been used here, that is in plural number. So the jury were divided in their opinions. But when we see that all those are single-minded, then we use a singular verb. The jury has elected its president. President has been elected by the jury. That means there was the decision of every member. Every member was agree on this point. That's why the word that has been here is singular. The jury has elected its president. Now we see our last sentence, and that is the council has postponed its meeting today. So the council word is also a plural, a collective noun, and we have seen here that the verb has is here and it is in singular number. So the council has postponed its meeting today. All were agreed to this point about the cancelling, about the postponing of the meeting. So dear children, मैंने कहा रूल नंबर 6 में डजन, स्कोर जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो फॉर्मेशन में सिंगुलर नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ उनको जो फॉलो करती है वर्ब वो प्लूरल में यूज की जाती है. जैसे इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्लेन पेपर? तो आंसर जो आता है 2 डजन कोस्ट 12 रुपीज. कोस्ट यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हम प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसको कहते हैं, या एस या ईएस फॉर्म उसको कह सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं. अब चूंकि डजन जो है हमेशा प्लूरल लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब V1 यूज हुई है. 1 score, I have written here 1 score. Again the same. तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया, लेकिन फॉर्मेशन वर्ब की वही रहेगी, कोस्ट आएगा. अब हम रूल नंबर 7 की तरफ आते हैं, जहां हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पेंस है और मीन्स है. पेंस और मीन्स को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, एज अ सिंगुलर भी और एज अ प्लूरल भी. ये यूजर के ऊपर, यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में उसको यूज करना चाहता है, सिंगुलर या प्लूरल. तो सेंटेंस के अंदर हमें अगर ये पता करना है कि वो वर्ड सिंगुलर यूज किया गया है या प्लूरल, तो हम वर्ब देखते हैं.
जब सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें वर्ब प्लूरल की यूज हुई है तो देन वी कम टू नो कि ये टर्म जो है यहाँ पे पेन्स वो प्लूरल की सेंस में यूज हुई है। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। इसी तरह से अगेन फिर पेन्स वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर वर्ब हमें बताती है, ये सिंगुलर वर्ब हमें बताती है कि यहाँ पे जो पेन्स सब्जेक्ट वर्ड पेन्स यूज हुआ है वो यहाँ पे सिंगुलर की सेंस रखता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। तो यहाँ पे भी वर्ब हैव हमें बताती है कि यहाँ पे जो मीन्स वर्ड यूज किया गया है वो प्लूरल की सेंस में यूज किया गया है। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट। यहाँ पे वर्ब इज हमें बताती है कि यहाँ ये रूल नंबर 8, कलेक्टिव नाउन की बात हम करते हैं। ज्यूरी है, कमेटी है या मॉब है या इसी तरह के और कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स सेम उसी तरह से सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। तो जब कलेक्टिव नाउन जो है यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। ज्यूरी यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल का एक कलेक्टिव नाउन, एक वर्ड नेम हो गया है ज्यूरी। तो यहाँ पे सेंटेंस की सेंस हमें ये बताती है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर हम इस वर्ड को भी फॉरगेट कर दें, अवॉइड कर दें, तो हमें इन देयर ओपिनियंस हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, वो सिंगल माइंडेड नहीं है, एक मत नहीं है। तो इसीलिए दैट्स वाई जो वर्ब यहाँ पे यूज हुई है वो प्लूरल नंबर में यूज हुई है। द ज्यूरी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, यानी सब ने एक साथ एग्री करते हुए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हुई है। द काउंसिल हैज पोस्टपोन्ड इट्स मीटिंग। काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब ने मिल करके उस दिन की मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, इसीलिए वर्ब हैज यूज हुई है। So hope students you understood it very well. We will keep continue the same topic in the next video. If you have enjoyed it, if you like it, you please inform me in comment box. Thank you.